So very special. This is a special for all the young nursing students watching us here. I would like to tell them big applause to all of you for beginning with this webinar to give a direction to your nursing as a career, because I know you're already doing your nursing curriculum in the Uttar Pradesh. So without wasting much of my time, I would like to invite all the panelists of today to introduce themselves. As I said, they themselves are the, what do you say, the pack of complete experience and success stories. I know they'll be able to make you feel the same at the end of the webinar. Here we go. We have 5 panelists with us: Mr. Jigson Simon, and Ms. Grishma Nair, Dr. Monica Hendriel, and Ms. Sibi Samuel, and Ms. Yashvi Mandal. I'm just waiting for Yashvi Mandal. Hope she is here in the group. I think I request all of you to go with a 1 minute quick introduction of yourself, from where you're coming from, your education, your experience, where are you working now. So a quick introduction from you. I think it would be good if we hear from you. Thank you. I think we'll start with Dr. Monica first. Thank you, Dr. Lavanya. Thank you for this opportunity. Thank you, Ritu, for setting this whole thing up. And I also thank Mr. Abhishek, who was instrumental in getting this program up and going. So a brief introduction about me would be that I'm a nurse. I've finished my bachelor's in nursing and master's in nursing from St. John's College of Nursing, Bangalore. So after my BSc, I went on to be a staff nurse for 2 years. And after which I pursued my MSc in obstetrics and gynecological nursing. And I joined at St. John's as a lecturer, and then further became an assistant professor and associate professor. I was holding the capacity of associate professor until May 21st, 2023. And I'm also a PhD scholar, and my area of expertise is neonatal nursing and developmental pediatrics. I also have a great passion for ethics, and I also have completed a fellowship course in pediatric bioethics from Children's Mercy Bioethics Center, Kansas City, Missouri, USA. So that's a very brief introduction about me. I'm happy to be here today, and thank you. Thank you, Monica. We are really looking forward to hear from you. Let's take Mr. Jigson Simon, please introduce yourself. Namaste to everyone. Thank you, Lavanya ma'am. And welcome to all the students who are here attending this webinar. I also would like to thank all the dignitaries for considering me as one of the options for being here. Lavanya ma'am as well. Thank you so much. It is a privilege to be here and be a part of this webinar. If our experience or words can help any student, any one student, it would be an achievement, I believe. So I am very happy to be one among you here. And about me, I've been in India. So I've studied. I've completed my schooling from Delhi. I completed my general nursing course from Nightingale Institute of Nursing in Noida, and I was under Lavanya ma'am's guidance as well. So I moved to Finland after my education was completed from Noida. So henceforth, I continued working here. I did a gerontological nursing course here. Then I've been working as a licensed practical nurse, and then I continued and upgraded my education and became a Bachelor of Nursing with EU competence. So I've been working as a registered nurse now. So I've been here for the last 11 years now. So it has been a wonderful journey. All thanks to Nightingale Institute for paving the way for the same. I have more to tell ahead. So
As of now, this is about me. Thank you so much, ma'am. Thank you, Jixon. Thank you to have you as our proud alumni. Thank you. Let's you. move with Ms. Grishma Nair. Good morning, everyone. It's my pleasure and my honor to be a part of this panel. My name is Grishma Nair. I was one of the students of the first batch of Nightingale. So I would say that it has not only made me a nurse, but made me holistically has improved my personality and all. So I passed out in 2019, finished my graduation. Then I did my post-graduation in mental health nursing from Chhattisgarh University. And I also did a correspondence course in MBA in healthcare. And I moved to UK and I was recruited by the NHS in 2019. So since 2019, I'm here. So when I started, I started as a band 5 and now I am a band 6 senior staff nurse, and I'm very, very honored to be a part and see my role model, Lavanya ma'am, in front of me. So yeah, that's all from my end. Thank you, Grishma. In fact, our teacher will feel proud when they see their students like this growing. That itself is a, gift for a teacher, I feel. Thank you so much for being here. And let me move with Ms. Siddhi Samuel. Sibi, you can introduce yourself, please. I think she's unable to unmute. Please unmute her. Yeah, very good afternoon to one and all the dignitaries, and especially to my principal ma'am for giving such an opportunity. And it's very grateful that such kind of platform has been open to focus on the career counseling. I don't remember that we have gone through such kind of a career counseling support during when we have doing our graduation. So thank you to UP State Medical Faculty and the government as well as Nightingale to collaborate and allow all the nursing students and all the nursing fraternity to come to one platform and discuss such kind of an wonderful topic, which is very much important. And I'll not go much into that. I just give my own self introduction. I did my graduation from Jalapa Medical College from Bangalore. And I did my post-graduation in medical surgical nursing, that also in cardiovascular nursing from Nightingale Institute of Nursing. And I'm working here in Nightingale, though I'm an alumni. Along with that, I'm working as an associate professor in Nightingale Institute of Nursing. So before my MSc, I'm having an experience working in a college as well as in a clinical area. And thank you very much, ma'am. Even after joining here with ma'am's support, I'm able to be more confident to speak on such a platform. Thank you, ma'am. And thank you once again for giving me such an opportunity to be a part of this. Thank you, Sibi, being part of this. We are also proud to have you as our faculty. May I see now whether Ishvi has joined us? Whether Ishvi is in the group? If she's not there, we'll move on with the discussion. Yes, ma'am, I'm here. Thank you so much, Ishvi. Yeah. Please introduce yourself. Yeah. Okay, so good evening to all the panel members and all those who are watching. So first of all, I'm extremely grateful for all the honorable dignitaries for letting me to be able to a part of this amazing panel and to be able to give me this opportunity to present my insights and experiences under this great initiative by the Uttar Pradesh government of Mission Niramaya. So first of all, it's my immense pleasure to seriously introduce myself among these panel members. So my name is Yashvi Mandral. I'm 24 years old and I'm from Delhi. I have completed my Bachelor's of Science in Nursing from Nightingale Institute of Nursing in the year 2020. So I have an aggregate experience of 2 years working as a clinical nurse in Apollo hospitals, and currently now I'm working in AIIMS Delhi. So I have an experience of 6 months where I have worked as a OT nurse in Apollo hospitals,
and an experience of 1.5 years and still counting as an emergency nurse in AIMS Delhi. So it's been a total roller coaster ride since the day I've joined nursing, and obviously our principal ma'am has guided us in every step, and I'm seriously feeling very proud that I'm at that stage where I'm able to at least inspire or motivate at least one individual also. So I would seriously like to thanks again to all the dignitaries for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you, Ishvi. Thank you for joining us. And this was all our panelists. Now we'll go move with questions for all the panelists. As we know, nursing is a profession which was like not much recognized before COVID. Fortunately or unfortunately, the COVID came in and the nurses are in more demand after this, the more recognition. We got a limelight, in fact, I must say, कि nurses के बिना hospitals नहीं चलेंगे. ये a complete version came up in a survey which has been done. So I must go with now Mr. Jigson. Do you agree with this? Nursing is a rewarding profession. बोलते हैं ना पुरस्कृत एक profession है, ये बहुत ही valued profession है. Because जब हम पब्लिक में जाते हैं लोगों को लगता है नर्सिंग, अभी भी बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है नर्सिंग क्या है, हमारा काम क्या है, really what we do. So they do not know our scope also. And also many children are studying in different institutions in UP and in India. Even बहुत बच्चे नर्सिंग को without knowing इसका क्या है, हमारा काम क्या है, हम क्या करेंगे, इसके बिना ज्वाइन कर लेते हैं. बाद में उनको पता चलेगा कि दिस इज नर्सिंग, दिस इज माय वर्क, दिस इज माय रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी. बहुत बच्चे कोप अप कर लेते हैं बट कुछ बच्चे कोप अप नहीं कर सकते हैं. तो I mean, I want to ask you, do you agree that it is a rewarding profession? Because Jigson, you have a wonderful experience in India, you have spent many years, and even in Finland, you have spent around 10, 11 years. So I must ask you, and please, there are many young children watching you. So speak on this. Is it a rewarding profession? Sure, ma'am. It is indeed a rewarding profession. When it comes to the practical meaning of reward, let's say financially, yes, it is. Moreover, when it comes to a profession, when we implement whatever is taught to us, and when we are on the field, when I say when we are on the field, I mean that when we are on the bedside, and whatever we do to the patient adds on to the deeds we do. Okay, somewhere their life is relied on us. We are a team, starting from doctors, right? So doctor issues instructions, we implement it. So we are the main point of contact. If there are no nurses, so the bridge would collapse. So when we speak about nurses, I think yes, rightly said, during Corona, people understood the value of nurses. Fortunately or unfortunately, I must say that even before that, we should have been valued, or we were valued. Depends upon how people's outlook are. But when we speak about this profession as a whole, it's a noble profession, as we know that it's like, theoretically also. But let's say, what do we take out of it after one shift, or after whatever we do to a patient? What do we take out of it? They will sit and say that, this nurse came and did this to me, and that's why the nurses were good. You are a reason behind a recovery of a human life, from a situation, from a particular health situation, from an accident, from whatever, like a stroke, a life-threatening disease, a life-threatening situation, a life-threatening condition. So you do your part, okay? It's not that only you are doing it, it's a team. So everyone, when they do their work, like, we are a key factor in their life when it comes to their stay during in the hospital. Okay, so we as a professional, we must consider this to be a privilege, an opportunity to provide our best, whatever we can. So when we start this profession, we don't realize it.
Why? Because there is lack of knowledge regarding this profession. This profession is a serious profession. That doesn't mean that this profession is a rocket science thing. No, it is not. It is a serious profession. It is about human beings. It is not that you're working on computer. A company might lose, or might enter into a loss because of some mistake happening due to their employee. You can't commit a mistake with a human being. Yes. It's about life and death. So you have to take this profession in the true meaning. When you say nursing, it means serving. Okay, so you are serving. That doesn't mean, see, when people have this, this sort of thought, nurses को कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी कुछ बोल देता है, so you have to go through anything. It's not like that. I think things have changed. Okay, your dignity matters. You are a dignified person. You have your own self-respect and everything. You carry on with that. You are a nurse. You should be proud about it. The main thing is that you are helping someone. Okay, and you are rewarded for helping that particular individual or that particular institution, whoever comes into that particular institution, I mean. So this is a serious profession. You should understand what nursing is all about. Don't get into it without knowing about it. And I'm telling you, this is no rocket science. It's all about knowing things as you should know. सब कुछ एकदम से नहीं पता लगता है. It's a gradual process. So that's why, so happy to see this particular mission initiated by the government of Uttar Pradesh, where and the state, and you're blessed to be a part of state medical faculty UP. I'm telling you, these people focus on quality. Okay, so why is quality being said? So we are not only about just giving an injection or putting a nasogastric tube. No, it's not only about that. It's about the holistic care. आप क्या बात करते हो वो भी बहुत मैटर करता है. आप एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, if you're treating a patient, it doesn't mean that you go and do whatever is said to you. You at least try to make an interpersonal relationship, like it's like a rapport. You create a rapport. So आधा बीमारी जो है ना, the problem gets down, it depreciates when you talk to the patient. So there's a lot of things happening in this profession. So it is indeed a rewarding profession in other way. Let's say growth, financial stability, job stability. One thing one should understand is that why nursing? Because hospitals or clinics band nahi hoga. Diseases are going to increase. Hospital will not shut down. You have the job stability. Yes. You are in need 24/7. You are in need 24/7. Hospitals are being shut down in other countries due to shortage of staff. Or in elderly home, there are shortage of staff, like a shortage of nurses. That's why they are shutting it down. Otherwise, the moment they get enough staff, they are wanting to open it up, because it's always these diseases, these problems, these situations, our life, human life goes through different stages. So of course, these diseases, problems goes on, and hospitals will never shut. You have a job stability, progress, job growth, and let me tell you, rewarding, when we expand that particular word, it's about also the growth professionally. Okay, so financially ho gaya, job stability ho gaya, and you have a growth, and that is professionally. It's not that you will be doing a bedside job every time. Okay, you have the opportunity to climb the ladder. You have the opportunity to grow in your own profession, become senior staff. As my friend Krishma is a senior staff right now in band 6. These things are like that's reward for whatever hard work you have put in all these years. So that doesn't mean that a nurse is always a nurse. Like the nurse becomes a senior staff, the nurse gets a team to control. A nurse can become a matron, a nurse can become a chief as well. I have people who have started nursing and who are sitting at band 8 right now. Band 8 is the topmost. Band 8, band 9 is very high positions. So this profession, limit, sky is the limit. There is no limit. Sky is a limit. But the only thing is that it becomes a problem when you don't have knowledge and the skill. Yes. When you have the knowledge, see this, as I said, it's not rocket science. हमें बहुत कुछ नहीं, हमारा human body है, उसके बारे से related है. Whatever it is, it's related to the human body. All right. So you have to understand that. You have to learn. You have to be prepared.
And then when you get out of this, your institute and all, when you have the knowledge, you have the skill, you are confident, and that's how you will start to love this profession, I would say. Thank Yes, you, ma'am. sir. Thank you. Thank you so much. I was really, you gave a facts stating that the hospitals are closed because of shortage of nurses. That is Yes. something, for all the nurses who are listening to us, even in UP, we have a shortage of nurses. We have 0.8 nurses per 1,000 of population, whereas as per against the WHO, it should be 3 nurses. So there's so Yes. much of, opportunities have been created even in the Uttar Pradesh. A lot of recruitment is happening in government hospitals. We are coming with many government colleges, even 157 colleges, what in new budget has come up. In UP itself is a 27 colleges that have been allotted. So you can see how much of population, means nursing population is going to increase in state of Uttar Pradesh. It's so demanding. It's so demanding. I think every child here will agree with me. They have a bright future. Thank you for that to explain to us that it's a rewarding profession. Let me go with now Dr. Monica. Jixon was saying that communication is so important because the whole patient safety lies on the nurses 24/7. We are working. Doctors are there, the whole team is there, but the whole patient safety lies on the nurse. So Monica will be able to, because she's a St. John's alumni, I think she'll be right person to express that communication is one important area where every nurse has to work out. So Monica, you can tell us anything. For these children, how do they work out on their communication, language? Yeah. So the first thing would be, see, you need not necessarily be excellent in English. That's again a myth. People always think if your English is good, probably your content is good. Not necessarily. Yes. English is just another language. It's just that we have laid a lot of emphasis on the language that somewhere down the line, we forget that the content is more important than the medium of communication. So language is very important in terms of your tone, the politeness with which you communicate, and your ability to reach out to other people without, any hesitation. Normally, a common thing that I see among nurses is that we have this inbuilt feeling of low self-esteem. Can I talk? Will it be okay if I say something? What will they think? What will he think? What will she think? Anyway, at the end of the day, it is the doctor who makes the final decision. So, these are all preconceptions in our mind. And some of it stems from a certain amount of inadequacy. Like sometimes we are not thorough with our content. Once we move to the clinicals, many of us forget about our books. We do not do a lot of everyday learning. It's not practical as well. Once you go to clinicals, even people who are doing really well in clinicals, there isn't time for you to come back and go through something or read a research article. Yeah. But if you look at the doctors, it's slightly different. When they're studying, when we are studying, we spend a lot of time on books. But once we start our work, unless and until we are in a teaching profession where every day you need to present something in front of students, our contact with books is very, very minimal. But for the doctors, if you look at them, most of the time, their studying starts when their clinical starts. They have presentations. We spend a lot of time in writing rather than, equipping ourselves every day. Of course, there is difficulties. I know doctors, the work of a doctor is not very similar to the work of a nurse. Our work profile is slightly different from the work of a doctor. But I feel the first step is to, enlighten ourselves. You need not necessarily open a book, but now we have everything in the palm of our hand, in a phone. At least probably read an article, when you're traveling, shuttling for work, or, when you're discussing something, or attend doctors' rounds. I know in foreign countries, attending doctors' rounds is a mandate, but probably in India, it is up to the nurses. If you're free, we can. If not, no. So, try to, incorporate that learning in your daily work, if probably we do not get time to, handle our learning after work. So once you start reading, you feel more confident. And once you feel more confident, you feel, more stronger to express your opinions when it comes to, a group. So communication is very important. The first thing is do not
rely totally on, I do not know English, how will I communicate? And the second thing is work on your self-esteem. You are good, you are enough, and that should take you to places. So that's what I would have to say on communication. Thank you, Monica. It's very well said. Though, see, हम सब here उत्तर प्रदेश में belong करते हैं, and बहुत बच्चे इंटीरियर में रहते हैं, वो इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं. So उसी में एक inferiority develop हो जाता है. Like हम इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं. ऐसे नहीं है. As Monica said, language एक means है communication के लिए. वो इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, आपका कोई भी रीजनल लैंग्वेज में बोलेंगे, बट सही बोलना चाहिए, सही लैंग्वेज को यूज करना चाहिए, एंड कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल्स को जानना चाहिए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. बट मैं ये भी कहना चाहती हूँ, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है नर्सिंग के लिए, क्योंकि आप अपने जगह में काम नहीं करेंगे, आप बाहर निकलेंगे, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में काम करेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ काम करेंगे, एंड इनफैक्ट इट्स नॉट दैट स्कोप इज ओनली लिमिटेड टू हॉस्पिटल. बहुत सारा इंडस्ट्री ओपन हो चुका है नर्सिंग के लिए. नर्सिंग का स्कोप हॉस्पिटल से भी बाहर निकल चुका है. Like there's a space nurse, there's a airport nurse, industrial nurse, school nurse. A lot more opportunities are coming up, and also specialty wise, when we look at, I will ask one of the speaker later, advanced nursing में भी बहुत सारा सब स्पेशलाइजेशन आ चुका है. तो वहाँ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप अपना कंट्री का नहीं, दूसरा कंट्री का पेशेंट्स को भी देखभाल करेंगे, तो उसके लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है. तो एज एवरीवन सेड, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. कहाँ विल पावर है, मोटिवेशन है, डेफिनेटली लैंग्वेज सीख सकते हैं. एंड इट इज नॉट ओनली इंस्टीट्यूशनल रोल, इट्स अ इंडिविजुअल रोल. आप इसके ऊपर डेफिनेटली so much of advanced technologies within you. You have phones, you have an internet. Just Google as you're traveling, look at the content. I recommend even you watch some funny movies. There are a lot of movies on nursing in English, so watch them, and I think that will be a kind of a motivation to learn a language. With this, let me move to our young nurse over here, Miss Yashvi. Yashvi is, she passed out her BSc nursing, as she said, in 2019. And she worked for 1 year in Apollo hospitals. And within 6 months, she left. Then she started preparing for AIMS examination. 6 महीने प्रिपरेशन किया, 6 महीने में उसने नॉर्थ सेट को क्रैक भी किया. आज वो प्राउड नर्सिंग ऑफिसर है एम्स में. And just to motivate all the young nurses over here, her salary, she's only 22, 23, and she's getting 80,000 salary. So ये एक सबके मन में ये है कि नहीं, मैं सैलरी नहीं मिलता है नर्सेस को. ये सही नहीं है, ये पूरा परसेप्शन ही गलत है. कहाँ आपका हार्डवर्क है, कहाँ आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आप रियली वो सक्सेस करियर लैडर को पहुंचना चाहते हैं. यशवी इज द ग्रेट मोटिवेशन. मैं यशवी से ये पूछना चाहती हूँ, यशवी, आपको नर्सिंग में आने के लिए क्या मोटिवेट किया? आप अपना मोटिवेशन को सब यंग नर्सेस के साथ शेयर कर सकते हैं? And also, how Yes, did you ma'am. enter AIMS? Yeah. Okay, sure. Okay, so ma'am, I'm talking about the young generation right now. So nobody wants to be a nurse. Matlab, if you will ask some child, then no one will say that I want to be a nurse when I grow up. Everyone will say doctor, engineer, pilot, and etc. etc. But no one will say nurse. That's what the situation is with me also. I always wanted to be a doctor, but then after 12th, when I started preparing for MBBS entrance exams, then I started searching for paramedicals also and other medical fields also. Then I came to know about nursing. Then I thought that maybe it's time to do something different. So my family was not like that. Ki, okay, chhod de, doctor mat ban, nurse ban ja. So no one was like initially very happy with the decision. But then I said that maybe let's just do it. Then I entered the nursing profession. Then since day one, when I entered, the theory was right, all right. मतलब पढ़ने में भी ठीक था, समझ में आ जाता था. But the day I started clinical nursing, the day I realized that it's not just about the books. It's about the patient. It's about the person, our life. And I have an experience of 2 years, and I worked as in OT also, and right now I'm working in emergency. So since the time the patient got admitted in the hospital, and since the discharge or the transfer,
or the death of the patient. We are with the patient. And we get so attached with the patient that you said that nursing is a rewarding profession. I agree. But not just rewarding in terms of job or in terms of financial security, it's also rewarding in terms of mental peace. If you just talk for 1 minute to a patient now, and you will be able to solve at least one problem of the patient, you will be able to sleep peacefully at night. And I'm sure, and I'm 100% sure that no other profession gives this privilege to a person, that mental peace. And everybody is so we don't want to work 9 to 5 job and this and that. But since Yes. day one, I have started clinical. I'm telling you, not just financially I've changed as a person also. Every human has a side of kindness in himself or her, which gets suppressed as he or she grows up, because the world is not like that you will be kind and the world will be kind to you. It's different. But I can't express in words. Now the question of yours that you said, that what motivated me. So that's with the thing that motivated me since day one as I joined nursing. And then it's not like I have prepared for 6 months only. I have prepared since day one, the day I have entered nursing only. I have got the proper guidance of teachers, all the faculty members of my college. They have taught me really well. Then after completing my bachelor's, I have joined. I actually completed my bachelor's at the time of COVID. So the situation outside was really, really bad. And I was so terrified that how will be I able to go and deal with these things. But then I started, then I was posted in OT. The experience was nice. I taught many, I learned many advanced techniques in Apollo. But then I thought maybe it's time to switch a little, and then I started preparing. So many students have this doubt that how should they start. So I will say that start right now in whichever year you are, first year, second year, third year, fourth year, doesn't matter. Start today with whatever you are going. If you are in fourth year, then start preparing fourth year subjects. If you are in third year, then start preparing for third year subjects. And then as gradually you have completed your bachelor's, then you can completely revise all your content that you have studied in all your 4 years. And there are many books in the market that will help you. Also, there are many platforms on the YouTube also that will help. And since past 1 year, I have noticed that UP government uh, has many vacancies for the post of staff nurse, like UP Secfai, RML Lucknow, Nestle Yes. PGI. These have provided many vacancies. I think more than 4,000 vacancies for the post of staff nurse. So it's a very huge vacancy. If you will start preparing now, then I'm sure that you will get a good job with good security, financial stability, job stability, and of course, mental well-being. Thank you, Thank you Yashmi. so much. One thing what I liked you is that you said money is not everything. Being human also matters, right? We have got, Yeah. as a nurses, we have got that one opportunity to be a human because you touch our lives every day. Like they say, nurse is the only one who opens the eyes of a newborn, and also she will gently closes the dying man, right? So this is, I think, this is a only one profession where you get an opportunity of seeing the new life and also the life the soul is going, and gracefully we accept all these things. So I think your journey, your preparations, what you shared with students over here, what I feel is हमने बहुत सक्सेसफुल स्टोरीज आउटसाइड नर्सिंग भी देखा है. बहुत सारे बच्चे रूरल में रहते हैं, इंटीरियर में, उनके पास फैसिलिटी भी नहीं है, बट वो यूपीएससी के लिए तैयार करके क्रैक भी करते हैं. इसके इसमें क्या है, एक विल पावर ही तो है, कुछ भी नहीं है. विल पावर टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो जब आप नर्सिंग में फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, as Ashvi said, I think the preparation starts from the beginning, not in the fourth year, not in the third year. Nobody can crack NORCET exam in 6 months because Ashvi had prepared since 3 years continuously in her curriculum in her college. She could do it without any obstacles, without any trouble, right? So the message to all the youngsters here is start your day, start your efforts from the day one, not at the last.
Yeah, anything to add? Ishvi here, you wanted to say something? Okay. No, mom, Thank just this. you. Thank you so much. Thank you for this wonderful contribution. Let me take Ms. Sibi Samuel. She's working as a associate professor in our college. And I think she'll be handling, she is handling most of the students being a HOD of the medical surgical department. I see the nursing needs a very, very strong persona, mentally, physically, and I mean, like psychologically, emotional intelligence is something we have to really work out on children and also nurses. So if I speak to Sibia on this, like, have you seen children being strong in nursing, or you think they really need to work out on this? If at all they're not working out as a nursing faculty, do you work on them? Are some some important key points for them to how do they work on their strength and weakness? Please unmute, CB. बिकॉज आपको पता है ना, बहुत सारा ये वीकनेस के वजह से हमारे अंदर एक इंफीरियरिटी डेवलप हो जाता है, इसलिए हम डॉक्टर्स के सामने बोलने में we are not confident because we are not confident, we don't have a many times knowledge and skill, वो एक hindrance हो जाता है. नेक्स्ट है वीकनेस, लाइक पता नहीं क्या गलत कर दूंगी या क्या गलत बोल दूंगी, यही में हम उलझ जाएंगे कि सही कर रहे गलत कर रहे. आई थिंक वी नीड अ बिकॉज दिस इज नॉट एड्रेस्ड इन करिकुलम. INC curriculum में ये नहीं लिखा है कि इसको करो, but it's a part of your psychology, your mental health nursing. You prepare nurses so strong that they can go through any, because COVID के जैसे एक situation can put us in any place. We do not know future what is going to bring to us. I think this is one area we really have to work, all nurses, these young children, to work on their mental strength, their emotional intelligence. Yeah, Sibi, please go ahead. Yeah. Ma'am, can you please repeat the question because of some network issue? This is about, I'm talking about students' strength and weakness. How do they overcome in a college time or being a nurse? Because we know emotional intelligence is one important area where children have to develop to be a good nurse, right? They go through a lot of critical areas. Are you able to hear me, Sibi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yeah. Being a faculty, you must be handling so many students, right? So. Yes, ma'am. Okay. So when the students come freshly, when they joined in a BSc GNM or as a first batch, when they join the college, they will be like, when we ask them, are you have joined by your own choice or it was like a pressure from someone? So many of them give the answer that it is by own choice, or some are from their family member itself. They will be from a same profession, or many are there who are saying that it is our parents has forced to come because it has a good job security. Basically, job security is there, and you have a lot of opportunities either to go outside or in an India itself can work in a government job. So based on that, their parents force them to come in. But many times there are many students who some are very smart enough, but some feel like that they have gone through so many emotional issues, काफी emotionally weak होते हैं, या बहुत सारे barriers आते हैं उनके बीच में interact करने के लिए, या not only interact और approach करने के लिए. ऐसे इश्यूज बहुत सारे फेस करने को मिलता है. आइदर दे हैव अ लाइक इंफीरियरिटी फील होता है कि हम सबके सामने कैसे बोले, क्या बोले. बहुत इनसेंसिटिव लोग भी होते हैं. लाइक इन दैट इश्यूज हाउ वी हैव टू गो थ्रू दैट सिचुएशन इज लाइक, एज अ फैकल्टी if I'll say, we have to, first thing what I have to say is, if there is any issue, such kind of issues are there, we never hesitate to come and approach your teacher or the person whom you are very much like you feel I am very confident or have a comfortability. Like there is some comfortable zone is also there. I can interact with this teacher or I can interact with that person. You should go and talk to them. What is an issue you are facing?
then they can come up with an issues, because whenever we feel like कि मैं उसको कैसे बोलूं, वो कैसे सोचेगा, या उस मैम कैसे सोचेगी, या वो पर्सन कैसे सोचेगा, then I think हम उस सोच में रह जाएंगे, उस सोच से बाहर नहीं आ पाएंगे. So never think about that कि the other person how they think or what they think. Go and approach, because the first thing what we required is, even in our profession, communication is one of the major aspect. Even we are teaching the student from the day one of the nursing till they finish their nursing profession, because that is major aspect which comes when you enter into the clinical area and talking with the patient. Because if there is no communication properly, obviously, then there will be a hindrance in delivering a health care. So that is one of the important aspect. The rest of the thing is like my panelist as well as our Yes. moderator has already shared. It is not some rocket science, our nursing. So Yes. it's only a holistic approach as well as a humanity approach, which I feel is we all are from good bringing up from our parents, even from our education, from the deep rooted, and we reach here. So the first, we should learn how to overcome your emotions, because beyond that, that is something which we have to overcome it. Hello. Am I audible? Okay, Sibi, little, I think internet issues. It's okay. We got you. I think students who are planning to move out from the college to take up a nursing as a career, I think they should really work on their mental health, physical health, because they're going to take a very rewarding and challenging kind of opportunities in different hospitals and different course of time in their work. So let's move on now. There's a lot of questions on how do we go abroad. I think Jixon, this is your question. This will be your answering question, because many children they think, okay, India में पढ़ाई करो और abroad चले जाओ. वो तो possible नहीं है. इंडिया में भी सर्व करना ही पड़ेगा कुछ साल. कहाँ आपने पढ़ा है, वहाँ कुछ साल तो आपको देना पड़ेगा. एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा. अपना देश को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर आप अब्रॉड जाइए. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब्रॉड में भी अपॉर्चुनिटीज है, इंडिया में भी अभी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहा है. बिकॉज आई नेवर रिकमेंड स्टूडेंट्स टू मूव आउट ऑफ द कंट्री. यहाँ पढ़ो वहां जाओ, उसमें मैं रिकमेंड नहीं करूंगी. बट स्टिल, इफ लाइक जिक्सन, ग्रीष्मा, anyone wants to go out of the country, it's most welcome, because this is your choice. You want to look forward your economical background, your career growth and all. It's absolutely fine. But I always recommend work for at least 2 to 3 years in India. Serve your own country, then you can look for the opportunities in India. Meanwhile, you can prepare. So Jixon, this is your question. As many children want to know how to go abroad, any country, because we are planning to have a separate session on different countries, different opportunities and criteria and eligibility. But here, I think we'll not be able to cover every country. You can speak generally how we can move out of India to abroad. Yours, Jixon. Thank you, ma'am. Thank you. I want to point out 2 to 3 things here. Panelists have discussed right now about communication, and apart from that, starting preparation from day one. Abroad जाना है तो first day से preparation शुरू कर लेना. Is anyone talking or? Please carry on. I was going to request you to speak in Hindi as well. Thank you. Sure, ma'am. I will. बहुत सारे बच्चे हिंदी में भी सुनना चाहते हैं. Please. कोई बात नहीं. मैं हिंदी में बात कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं. Actually मैं ये बोलना चाहता था कि ना panelist में काफी बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कम्युनिकेशन के बारे में. एंड देयर इज अ फियर. हाँ, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ. अगर मैं 10 इंग्लिश का वर्ड्स बोल लेता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक बहुत हाईली क्वालिफाइड हूँ. ऐसा नहीं है. दिस इज अ मिथ. इसको क्या बोलते हैं, एक अफवाह है इन हिंदी वी से, राइट. सो आप ये सोच के डीप मत हो जाइए या अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचा मत करिए, यार. ये मत डरिए कि यार मैं नहीं बोलूंगी, मैं कैसे जाऊंगी. मैं आपको ये बताता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ. आई स्टडीड फ्रॉम इंग्लिश मीडियम. या आई हैव माय फ्रेंड्स जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करा है, जिन्होंने मलयालम मीडियम, आई एम फ्रॉम केरला एक्चुअली, सो मलयालम मीडियम में पढ़ाई किया है, एंड दे आर नाउ सिटिंग आउटसाइड, सक्सेसफुल है. और उन्होंने, जब वो इंडिया में थे, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे. ठीक है. सो द थिंग इज दैट
इट्स अबाउट आवर अप्रोच, हम कैसे अप्रोच करते हैं। हम अपने जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस बोले तो हमारे पास बुक्स है, हम उसको बुक को ऐसे ही रखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो यू हैव टू यूज इट, राइट, तभी उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। सो हमारा अप्रोच टुवर्ड्स द रिसोर्सेस वी हैव, लाइक जो हमारे पास चीजें हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसको हम कैसे यूज करते हैं वो बहुत मायने रखता है। सो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम डे वन, ठीक है। बाहर जाना बहुत इजी हो गया अभी तो, इन माई टाइम्स इट वॉज वेरी डिफरेंट। बाहर इंसान क्यों जाता है? दो रीजन, एक एक मेन रीजन इकोनॉमिक होता है, ठीक है। आई हैड दैट रीजन, मेरा इकोनॉमिक रीजन था। आई हैड, इट वाज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी। मैं बाहर जाऊंगा तो मैं अपना फैमिली को देख सकता हूँ वाला सिचुएशन था मेरे लिए। सी 10 years ago situation was different, okay. We had a pay scale of 5, 6, 7,000, 8,000 privates में, and गवर्नमेंट में भी बहुत कम था, यू नो, आई एम सेइंग इंडियन रुपी, ओके। सो गवर्नमेंट में भी कम था। आप सोच के देखो, रिलेटिवली कम था गवर्नमेंट में, मैं ये कह रहा हूँ। तब भी मतलब 25-30 तो शायद लोगों को मिलता था, relatively कम था। आई एम सो हैप्पी फॉर यशवी that she's my sister's age, and she's earning a decent salary. It's not about the salary, it's about उस बच्ची ने कितना एफर्ट डाला है, यू नो, यू आर मेकिंग यूज ऑफ दैट रिसोर्सेस, राइट। सी Thank you, बाहर sir. आगे तो इसका मतलब बाहर आगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंड ऑफ द रोड है। बाहर इंसान कुछ कुछ रीजंस के लिए आता है। फर्स्ट रीजन इकोनॉमिक होता है कि ना, सैलरी, हमें इनकम ज्यादा हो। इनकम क्यों ज्यादा होता है बाहर? लेट्स आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि ना, बाहर जिनका भी इनकम जो भी है ना, हमें पता होता है, क्योंकि वेरिएशन ज्यादा नहीं होता है। हम नर्सेस का, हम सबको मालूम होता है कि हमारा इनकम कितना है, चाहे मैं फिनलैंड में बैठा हूँ चाहे यूके में बैठा हूँ, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हमें मालूम होता है। तो कन्वर्शन रेट इंडियन रुपी में ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। नहीं तो यहाँ पर वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो। सो एक्सेप्ट यूरो या तो फिर एक्सेप्ट पाउंड के अलावा ना, आई एम टेलिंग यू, यू विल मिस योर फैमिली। I left my parents at the age of 23. Yeah, I left my parents at the age of 23. 4-5 साल में मैं बोलने लगा था, मेरे पापा में बोलते हैं। सो अब लगा लो 5 साल से 22 साल तक जब मैं था, उतने सालों का ही मेरा साथ था मेरे पेरेंट्स के साथ। दैट इज द मोस्ट हेवीएस्ट पार्ट एंड द सैडेस्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग, ओके। सब सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, मगर सी, यू गेट समथिंग, यू हैव टू अचीव समथिंग, यू हैव टू गेट समथिंग, यू लूज समथिंग, राइट। सो मेरा नीड वो था, तो मैं निकल गया, और मेरे को अपना, एंड थैंकफुली आई वॉज एबल टू डू दैट, राइट। सी, अगर मैं यहाँ पर आ गया, अब मैं इसको कैसे एक्सिक्यूट करूंगा? इस जो मेरा रिसोर्स है यहाँ पर, अगर मैं उसको यूज नहीं करूंगा ना, तो यहाँ पर भी मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, ठीक है। सो things have been very easy right now. How will you go abroad depends upon how your preparation is from day one, as Lavanya ma'am said. आपका डे वन से आपका प्रिपरेशन कैसा, उस गोल के लिए आपका एक क्लियर विजन है, उस गोल के लिए आपका क्या प्रिपरेशन है, उस पर डिपेंड करता है। वरना तो मैं, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, अगर एम्स का सैलरी अगर ये है अभी, आई एम सो हैप्पी दैट दिस इज अ सैलरी। मैं आपको बोलूंगा, आप सब मिलके प्रिपरेशन शुरू करिए। आप अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए, आई थिंक आई हैव हर्ड दैट इवन प्राइवेट्स आर पेइंग हायर सैलरी दिस डेज इन इंडिया। सो आप वहां पर जरूर काम करिए, उधर अच्छी तरह काम करके आपको लग रहा है ठीक है, आई हैव गेन्ड एक्सपीरियंस, आप बाहर चले जाइए। एंड लेट मी टेल यू, we have an habit of being spoon fed. सब कुछ, you know, that is our culture, our work culture also. हमारा टीचिंग कल्चर भी वैसा है। See, I'm not deeming you, I'm not saying that that's wrong. Of course that is good, but मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि ना, मैंने आजकल बहुत कुछ सुना हुआ है कि ना, लोग बाहर जाने के लिए ना एजेंट्स को देखते हैं बहुत जल्दी। अच्छा है, आप अप्रोच कर लीजिए, मगर ना, आज ये जो इंटरनेट आपको मिला है ना, इतना पावरफुल है। यू डोंट हैव टू गो टू एनी XYZ। आप उधर घर पे बैठ के आप इन साइट्स में देख सकते हो कि बाहर कैसे जा सकते हैं। कितने सारे लोग यूट्यूब में अच्छा अच्छा चीजें बोलते हैं, वो उसको कैसे किया है, उन्होंने क्या किया। इवन दो आपको बाहर नहीं जाना है, आपको इंडिया में काम करना है, आप बैठ के देखिए, आप गूगल करिए, आप इंटरनेट में जाइए और उस पर देखिए कि यार कैसे, अच्छा, एम्स को ऐसे क्रैक करते हैं, क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, ऐसे करना है।
So all these things are available in your hand. These are your resources. ये आपके resources हैं, उसको यूज, लाइफ सिचुएशन कैसा है उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा, आप उसके हिसाब से डिसीजंस लेंगे. नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस. आई केम टू नो रिसेंटली कि बच्चे लोग बोलते हैं कि ना पापा मम्मी क्या कहते हैं शादी करवाना चाहते हैं उसके बाद एंड ऑल दैट स्टफ. सी लेट मी टेल यू, एज आई सेड आई लेफ्ट माय पेरेंट्स एट द एज ऑफ 23, यू नो. तो इट्स नॉट एन इजी डिसीजन, एब्सोल्युटली नॉट. ओके, मुझे तो अंडा भी बॉईल करना ढंग से नहीं आता था जब मैंने छोड़ा इंडिया. ठीक है, आई डिडंट नो हाउ टू कुक इवन एग प्रॉपर्ली. माय मदर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड फॉर मी, सर्व इट ऑन द टेबल, आई यूज्ड टू हैव दैट. अभी बात अलग है, अभी तो मैं खुद बनाता हूँ, वो बात अलग है. बट yeah, exactly. So thing is that हम जब क्या कहते हैं, you know, माय फादर्स फर्स्ट कंसर्न पता है आपको क्या था जब मैंने छोड़ा था इंडिया? उधर जाके ना किसी फॉरेनर से शादी मत करना बेटा. यही था. Lighter मैं आप note. उनका बेटा जा रहा है. Lighter note. Exactly. Lighter note. Yeah. Exactly, on a lighter note. And the thing is अभी अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं शादी के बाद and all, see this is a part of our culture. उनका वो एक डर होता है, उनका वो caring पार्ट होता है. सो हाउ कैन यू अकम्प्लिश दैट पर्टिकुलर पार्ट? कैसे उसको सरपास कर सकते हो? आप अपने पेरेंट्स को दिखाओ ये सब कुछ, एजुकेट देम कि पापा मम्मी इस फील्ड में कितना प्रोग्रेशन है, कितना मैं आगे जा सकती हूँ, कितना मैं आगे जा सकता हूँ, कितना मेरा फ्यूचर है, मैं आपको उधर ले जा सकती हूँ. मैं एक बार वहां पर पीआर हो जाएगा, मैं आपको ले जा सकती हूँ, घुमा सकते हूँ, उसके बाद मैं आ जाती हूँ आपकी इच्छा की तरह. सो देर इज वे, द अप्रोच करिए, अप्रोच आपका करेक्ट होना चाहिए. ये सारा सब चीज का सोल्यूशन है. ठीक है. सो यस मैम, आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट. Thank you so much. As you said, it's not good to go immediately to the agent without knowing their background, because many children have been duped by giving money, but they didn't get an opportunity, right opportunity. But I must say, UP government is also coming up with a lot of initiation for this kind of making a facilitation for children who want to go abroad. Like they are tying with TNI. There's so much is happening in TNA also. They are training nurses. Whoever is a training nurses association member, and they're sending from here free of cost after training them. The one important thing is NHS is hiring now. No other country is really working on that. And also Australia and New Zealand is also hiring, right? So children who want to go abroad, they can work in this direction. Especially they have to work on their language now. अभी English जरूरी है, अब तक जरूरी नहीं था. Abroad जाना है, English जरूरी है. आपको ऑक्यूपेशन इंग्लिश टेस्ट को करना ही पड़ेगा, ट्रेन करना ही पड़ेगा. उसमें शायद 7 या 6.5 स्कोर है, उसको लेना ही पड़ेगा. लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में आपको ये स्कोर लेना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे, राइट? सो आई थिंक आई विल call again abroad ka opportunities. I think we'll stop it here because yes, we will have a separate session on this, a country wise demarcating like how they can go about. For now, I think they can all work on their language because that is must. If they are going to like Finland, you are there in Finland, you must have learned Finnish by now. If you are going to Japan, yeah, Mr. Now I was about to say one thing that I just want to tell all the students. आप सबको एक बात बताना चाहिए, language की बात जो आती है, why do we say that is because communication with the patients, with the client or patients we say is in that language, English में है. तो वो important है. अगर वो नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा. Correct. नहीं चलेगा. See, I am in a country where there is no English. और मैं यहाँ पर आया था तो मेरे को स्वीडिश भी नहीं आता, फिनिश भी नहीं आता था. इट्स अ बाइलिंगुअल कंट्री. यहाँ पर 2 भाषा बोलते हैं, वो फिनिश है और स्वीडिश है. इंग्लिश बोलोगे तो वो बाहर खड़ा कर देंगे, नहीं आता भैया हमें, बोल देंगे. तो वो स्वीडिश बोलने, मैं यहाँ पर आके स्वीडिश पढ़ा. व्हाई डिड आई लर्न स्वीडिश? आई टुक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट क्योंकि मेरे को सर्वाइव करना था. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट ये था कि आई न्यू दैट विदाउट one of their official language I can't even communicate with them. How will I execute my profession? True. I will not be, मैं कर नहीं पाऊंगा अपना काम. So that's why see, आपको survive करना है इस प्रोफेशन में, आपको अच्छा आगे बढ़ना है. You do this. English है, doable है. अगर मैं स्वीडिश, मुझ जैसा एक मीडियोकर स्टूडेंट, स्वीडिश एक बहुत अननोन लैंग्वेज था मेरे लिए, मैं सोच भी नहीं सकता मैं कर दूं.
If I can do it, everyone sitting in Can this do it. panel, Yes. जो भी है और सारे nursing students can do it. I'm 100% sure. Thank you. Nothing is undoable. Thank you for that motivation, Jixam. Thank you so much. Lavanya ji, there is a question in the chat box. I'm going to just intervene. Yeah, please. Which matches a lot of questions जो हमारे पास आए थे, students जो पूछ रहे थे. तो ये भूमि है, BSc nursing 4th year की student हैं. इनका सवाल है कि what should I do after completing graduation? What is the right choice? So I think Monica ने यहाँ पे कुछ लिखा है, तो we can ask Monica because वो ये भी पूछ रही हैं कि academics कैसे join करना है. तो between Monica and Sibi they can respond. तो पहले Monica Yeah. थोड़ा सा बता दें, फिर Sibi बता सकती हैं. Monica can respond to this question. Thanks, Bhumi, for that question. So now I know your question was, what do we do after our graduation? So this depends on number of things. It depends on what your skills are. If you are good at, very skillful at your bedside nursing skills, probably, nursing, being a staff nurse and, furthering yourself like that would be a good option. And if you think that, okay, I would not be wanting to do this for long, but I want to get into teaching. So if you say teaching, again, I would say you cannot just say you can jump directly into teaching, because I've always seen nursing teachers who have clinical experience are better teachers in comparison to teachers who have no clinical experience and who just went in, after BSc, I went in for 1 year of teaching, and then I did MSc, and then again, I went in for my master's. So that doesn't work. I personally feel that teachers with clinical experience and then who went in for their masters have greater understanding of the subject. They're able to relate to the clinical nurses, the difficulties, and they're able to proceed further. So it depends on your interest. So if you would like to go for teaching, I would personally suggest you to have 1 to 2 years of clinical experience, minimum at least 1. And probably after that, you can work as a tutor or clinical instructor for a year, then pursue your master's. And after which you can, go ahead with your teaching profession, and sooner or later down the line, you can do your doctorate. And then meanwhile, you would start realizing, I'm very interested in this particular area, probably ethics. I'm interested in nursing law. I'm interested in forensic. Then there are so many small modules, courses which are available online. Like for example, ethics course, you have a module with a 2-year course in CMC Vellore. You have Manipal, which has a ethics course. You again have a diplomate course in ethics and law. Or if you think that, someday I want to become a principal, or, I want to become a nursing superintendent, there are courses like MHA, MBA, it depends on your skill. Now, suppose you're a very poor leader, then administrative jobs will not come easily for you. So it depends on what your skill is and what you want, because you also need to decide your job based on what it gets to the table. I am so sorry for talking in English. I do not know. I can tell them in Yeah. Hindi, whatever. Thank you so much, Monica. Yeah, as Miss Monica said rightly, identify your skills. आपका क्या skills है पहले वो identify कीजिए. Because सब कुछ नहीं बन सकते हैं. But ये 1 साल का clinical experience mandatory है. अच्छा रहेगा 1 साल clinical experience करने के बाद में आप teacher बनिए, industrial nurse बनिए, कुछ भी बनिए. But you have a solid clinical background. So that is what Monica ji is telling you all. Take 1 year of clinical experience. Then you think of researcher banna hai. And many people have asked, how do I enter armed forces? Means defense में कैसे entry करना है? Defense में भी बहुत ज़्यादा demand है. वहाँ भी nursing करते हैं लोग. And civil nurses को भी demand है because वहाँ shortage हो जाते हैं. उसके लिए भी अलग exam होगा. Armed forces के लिए अलग exam है. You must look कि कब इसका एग्जाम्स के लिए कॉल आता है डिफेंस के तरफ से, उस एग्जाम को आपको अटेंड करना पड़ेगा. उसके बाद में देयर इज अ लॉट ऑफ protocols like your physical examination, because they go with a very, very precise physical examination, your medical examinations. So if you go through and pass through all these things, फिर आप डिफेंस में भी जा सकते हैं. So as everyone said, sky is the limit. हम सच में we can soar the heights. If you're in a real mode of doing something great in nursing, आपको कोई limitations नहीं है. Ma'am, I want to add something.
Sorry, yeah, I'll just pose this question and then Okay. everybody can keep adding. So there was a question कि GNM के बाद क्या कर सकते हैं, तो आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें वो ऐड करके इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए. CB can answer this GNM के बाद में क्या कर सकते, फिर we'll take Yashvi's corrections. Yeah. After GNM, what are the opportunities? I think she is not unmuted. Don't mute Yeah, yourself. hello. Yeah. Yeah, ma'am, am I audible? Yes, you're audible. Please go ahead. After GNM, there is a lot of opportunity. Either in a college side, if you further you want to upgrade your nursing degree, you can go, or else you can have a 1 year of experience in clinical area, because along with theory in our profession, skill is also equally. So only with the theory, I don't think so we can play in a nursing profession. So skill is very much important. So either you can work in a clinical area, because after GNM also there is an opportunity for CHC as well as working in CH community health nurse and in a government job. And those who are interested to upgrade their degree, they can go with this, because now upgradation is very much important and Okay, I think there's people are doing that. So there is a lot of, there are two chances. Either you can continue with your education, or else you can enter into the clinical area and you can take an experience. After that, you can come back. अभी तो बहुत सारा advanced things are happening in India. We have come up with advanced practices. So आप clinical में रह के ही lateral entry करके PBBSc means PBBSc is full time as per INC करना पड़ेगा. उसके बाद में there's a you can go for your master's degree like called as your midwifery practices, independent midwifery practices. That is for the master's students as well. So you can work out in your clinical as well as in your theory, because as in abroad country, now I'll be moving to our next panelist, Grishma, because she's working in NHS. She'll be able to tell us what is advanced nursing practices over there. In India also, we have come up with independent nurse practitioner in critical care and also nurse practitioner in midwifery. Yes, ma'am. INC has started that. Right. Yeah. So I think we can take Grishma to talk about different opportunities in abroad, how nurses are working, and what is exact like nurse-led care units and all. You can talk little to motivate these young nurses. Hindi mein, Grishma, I remember you telling us not to speak in Hindi, so please speak in Hindi. Hindi mein bolegi wo. Definitely, she is from North. Sure. Yes, मैम ने जैसे पूछा नर्सिंग में यहाँ पर क्या स्कोप है. So according to me, as far as I've seen, नर्स का सिर्फ काम डॉक्टर ने जो बोला वो फॉलो करना नहीं है, but at the same time आपको क्या लगता है आपके पेशेंट के लिए क्या बेस्ट है, you can give your input. So that is very important. So that kind of accountability and responsibility that you get here is actually what motivates you more. मैंने बहुत बार I mean personally भी मुझे इंडिया में clinical side में मुझे अच्छा नहीं लगता था, because I feel many a times we are taken as somebody who doesn't know and just we follow what the doctors say. हमको नहीं आता है, हम तो बस डॉक्टर जो बोलेंगे वो करेंगे. But as ma'am has asked me, यहाँ पे जो MDT रहता है, जो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम रहता है, जिसमें OT, फिजियोज एंड एवरीबडी इज देयर, सो उसमें इक्वल पार्ट रहता है एक नर्स का टू से हाउ डू यू फील अबाउट योर पेशेंट. मैं मेंटल हेल्थ नर्स हूँ, तो हमारे लिए इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू डू MSc वगैरह ऑन अ डेली बेसिस, और हमारा पेशेंट कैसा कर रहा है उनका मेंटल प्रेजेंटेशन बताना इन अ मीटिंग and in rounds doctors ka ki how are they doing that. And
Secondly, when it comes to क्या career growth रहता है, so as I said, when I started, मैंने band 5, that's staff nurse का basic जो job शुरू होता है, वहाँ से शुरू किया, and career growth के हिसाब से you can start 18 months के बाद से ही आप अपना next जो आपका पड़ाव है उसके लिए आप try कर सकते हैं. तो मैंने band 6 में फिर हुई, एंड उसके साथ में यहाँ पे ट्रेनिंग का बहुत दे गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, इवन जो अपना वैलिडेशन के टाइम में वो इम्पोर्टेंट रहता है. तो आपको जो ट्रेनिंग करना है, आपको जो कोर्स करना है, यू कैन डू दैट. एंड इक्वली रिसर्च के लिए भी आपका स्मॉल क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स जो बोलेंगे वार्ड के लिए, अगर आपको वो करना है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है. आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, जो भी नर्सेज जो ग्रेजुएट मेरे ऑल माय फेलो स्टूडेंट्स हु आर लाइक देयर इन इंडिया, जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, ये नहीं सोचना कि आपको कुछ नहीं आता है. ऑलवेज रिमेंबर, आप रोज कुछ ना कुछ सीखेंगे, और जब क्लिनिकल में जाएंगे तो ये नहीं सोचना कि मेरा टीचर ने आके नहीं सिखाया मेरे को कुछ तो मुझे नहीं आता है. यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि आप वहाँ के जो स्टाफ नर्सेज है उनको शैडो करो. अगर उनको टाइम नहीं है आपको कुछ बताने के लिए तो भी आप उनको देखकर सीखो, एंड ट्राई टू गेट अ मेंटर फ्रॉम द नर्सिंग स्टाफ में से ही, ताकि आप उनको देखकर कुछ कुछ सीखो. फिजिकल ऑब्जर्वेशन, अगर थर्ड ईयर में भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये कर रही हूँ, मेरे को तो और कुछ नहीं आता है, मेरे को तो ब्लड लेना नहीं आता है, वो वहां पे अपना सोच को नहीं कम करना, बट वो फिजिकल ऑब्जर्वेशन से ही आपने क्या क्या सीखा. अगर आपको वो पैरामीटर्स समझ रहा है, सीओपीडी में क्या हम पैरामीटर यूज करते हैं, हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन में क्या करते हैं, तो वो भी आपने कुछ सीखा है. I still remember when I was a clinical instructor back in India, I used to tell my students, every day is a new learning topic for you. Anything, कुछ भी छोटा अगर बोर्ड पे भी कुछ लिखा हुआ है, take it out, look for it, पढ़ो उसके बारे में and do it. So I don't know if I have actually मैंने आंसर किया क्या लावण्या मैम के क्वेश्चन को, Yes, yes. but मैंने you have done it. See, this is more than enough for this session now, I think. एक बच्चे ने पूछा है, आफ्टर जीएनएम फाइनल स्टूडेंट मैं पीसीबीएसई कर सकती हूँ क्या इमीडिएटली? यस, यू कैन डू इट. अनु कुमारी, आप कर सकते हैं. आपका प्रॉपर एग्जाम हो गया हो, जीएनएम का रिजल्ट आ चुका हो, फिर पीसीबीएसई कर सकते हैं. ऐसे नहीं कि जीएनएम खत्म होते ही कर सकेंगे. रिजल्ट आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आप यूपी में ऑफ कोर्स पीबीबीएससी नर्सिंग कर सकते हैं. बट एमएससी नर्सिंग के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है. एम्स में मैंडेटरी नहीं है, बट दूसरा सब कॉलेजेस में मैंडेटरी है. सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड हर. अच्छा, मोनिका हैज आल्सो आंसर्ड. Okay, I think I'll take a quick round of questions to all the panelists now. Like, आपका क्या एक बिगिनर के लिए एक 3 messages देना चाहते हैं? Quickly, if I take 3 messages you want to give. Let's start from Grishma only. If you want to give a very quick 3 key messages to the youngsters who are listening to you, what will be your message? Every day is a new learning. Be kind to yourself and to others, and be responsible for your action. Okay, thank you so much. Can I go with Sibi now? I think Jigsan can go if still Sibi is coming. She's unmuting herself, please. I have 3. If you're speaking about 3 points: focus, mindset and vision. Focus, आपको एक focus होना चाहिए. Don't आप ही चला रहे हो अपनी गाड़ी, so steering इधर उधर करने से आपका accident हो जाएगा. एक focus, तो आप straight जाइए, आप अपना राह देखिए. बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे. I just want to add something here. Finland is considered one of the most is the happiest country in the world as per data. Okay, पता है आपको उसका reason क्या है? One of the reason, मैं यहाँ पर हूँ इसलिए मैं इस कंट्री को बोस्ट नहीं कर रहा. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड. आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम ट्राइंग टू गिव यू सम वेरी फैक्ट्स व्हिच आई माय सेल्फ हैव लर्न. एक रीजन ये है कि पीपल हियर डोंट थिंक अबाउट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग.
दे लिव देयर ओन लाइफ, दे हैव देयर ओन विजन, द गोल, वो अपना जीते हैं, जैसे है वैसा है, वो दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों को प्लीज करने के लिए कुछ नहीं करते। तो आपका फोकस, आपको मालूम है आपको क्या करना है लाइफ में वो। और थर्ड है विजन, आपका एक विजन होना चाहिए कि आपको कहाँ जा रहा है आपका लाइफ, आपको। अच्छा, मैंने आई हैव सीन दैट पीपल आर सेइंग, स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट आपको बीएससी करना है, एमएससी पढ़ना है, या तो गल्फ कंट्रीज में जाना है, बाहर जाना है। आपका एक विजन होगा, एक एक वो होगा कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब करना है। सो वो एक विजन आप बना लीजिए, उस विजन को अचीव करिए। सी, वन स्टेप एट अ टाइम, आप अचीवमेंट आपको मिलता रहेगा। डू योर हार्ड वर्क एंड योर कमिट, इफ यू आर कमिटेड एंड यू सिंसियर टुवर्ड्स वट एवर यू डूइंग, आई एम टेलिंग यू, नो पावर ऑन दिस यूनिवर्स, इन दिस यूनिवर्स विल बी यू नो अगेंस्ट दैट। ये जो बोलते हैं ना कि सब आपके लिए फेवरेबल होगा, तो वही होने वाला है। सो ये तीन चीजें जो है, माइंडसेट एकदम फोकस होना चाहिए। डोंट गेट, क्योंकि ये 3.5 years जो है ना आपका, या 4 years जो है, 4 years एंड प्लस यू आर डूइंग एमएससी ऑल्सो, क्लिनिकल्स ऑल्सो, एज ग्रीष्मा सेड, देयर माइट बी अप्स एंड डाउन्स इन योर करियर, और स्टडी लाइफ में भी होगा, मगर वो एक विजन, आपका जो फोकस है, वो माइंडसेट है, वो कभी भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। एक बात आपको याद रखना है कि यू आर इन प्रोफेशन विच इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर एवर, इतना ही है। और वो इन अ पॉजिटिव वे, आपकी फैमिली का लाइफ भी चेंज हो जाएगा, यू विल बी हैप्पी फॉर व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। आप इन योर फ्यूचर, आप अभी आपका प्रेजेंट के लिए आप, यू विल बी ग्रेटफुल टू दीज टीचर्स एज वी आर। मैं हर दिन, मैं नहीं बोलूंगा, आई ऑफन रिमेंबर my alma mater, I remember Lavanya ma'am, I remember Nightingale Institute every day, क्योंकि आज जो भी कुछ हूँ मैं, ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ देम। सो आपको इमेजिन भी नहीं कर सकते आपका लाइफ कितना बदलने वाला है। सो बी फोकस्ड, ओके, थैंक यू। Thank you so much. Thank you. I think Sibi can go with those Yes, three. ma'am. Yes, ma'am. Yeah. The first thing what I have to say is stay positive, because if you are positive, obviously around you, everything will be in positive only. And set your goals. Fix your goal, because either you have to go abroad, or you have to crack a government job, or you have to upgrade your degree. What it is there, be set with the goal, what you have to exactly do. And don't underestimate yourself, because I am a nursing, because I'll tell you in the upcoming future, the upcoming years, this will be having a bright future. Our nurses are future, and even after a post-COVID, there was a lot of changes has come, because the nursing itself is called as a backbone of the healthcare sector. So it has a bright future. So don't underestimate, be confident. अगर एक बार या दो बार या तीन बार एग्जाम क्रैक नहीं किया, okay, prepare yourself totally, engage on the thing, goal what you have already planned and set, and carry on with that, go on with that. Not third time, the fourth time obviously you will. So all the best for all the young nursing buds here. And with this I'll just conclude. Thank you, ma'am. कभी अपने आप को कम मत समझिए, आपके अंदर वो विल पावर है। आप हमेशा एक बात को याद रखिए, जब भी अंडा को बाहर से हम तोड़ देते हैं, लाइफ नहीं आता है। जब भी अंडा खुद अपना एफर्ट डाल के बाहर अंदर से तोड़ देता है, लाइफ आता है। दैट मीन्स आप जब अपने अंदर से फोर्स लेके कुछ करेंगे, वो सक्सेसफुल होगा, ही रहेगा। सो प्लीज वर्क इन दैट डायरेक्शन, all of you, all the messages. I think I'll go with Yashvi now. 3 messages. Yashvi wanted to add on something. You can add on that now. आप add कर सकते हैं यशवी। हिंदी में बोलिए प्लीज, हिंदी में बोलिए। ठीक है। मैम एक्चुअली जब हम कॉलेज टाइम पे होते हैं, या जब हमने नर्सिंग बीएससी अपना कंप्लीट किया होता है, तो स्टूडेंट्स जनरली बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। जैसे अभी कमेंट्स में भी काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या करना चाहिए। तो हम लोग जहाँ से जो चीज सुनते हैं, हमें लगता है कि शायद वो सही है। जैसे किसी ने बोल दिया कि एमएससी करो, तो हमें लगता है एमएससी करना चाहिए। किसी ने बोला क्लिनिकल में जाओ, तो हमें लगता है क्लिनिकल, या फिर जो भी जिसने बोला हम वैसा मान के चलने लगते हैं। बट यही एक प्लस पॉइंट है हमारे प्रोफेशन का, कि हम जब चाहे, हमारे प्रोफेशन में कोई एज नहीं है, हम जब चाहे हम तब वो चीज कर सकते हैं। मान लो अभी हम 35 के है, हमने एमएससी नहीं किया, अब हमें एमएससी करने का मन है, हम एमएससी तब कर चुके हैं, कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जो आई थिंक सिर्फ हमारे प्रोफेशन में ही हमें मिलता है। तो कुछ चीजें मैं ये ऐड करना चाहूंगी। जैसे मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट्स नॉट लाइक कि मैं ऐसे फोर्स कर रही हूँ सबको, बट जैसे ही हम बीएससी कंप्लीट करते हैं, तो मैं ये रेकमेंड करूंगी कि सबको, जैसे सबने बोला कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेना चाहिए।
इससे क्या होता है, जैसे जब मैं अपने स्टूडेंट टाइम पे थी तब मैं सोचती थी कि मुझे पीडियाट्रिक में मास्टर्स करना है आगे जाके, बट जैसे मैंने क्लिनिकल में स्टार्ट किया देन आई थॉट कि तब मुझे समझ में आया कि पीडियाट्रिक्स से ज्यादा इंटरेस्ट मेरा मेंटल हेल्थ नर्सिंग में है। तो अब मेरा जो गोल है वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में मास्टर्स करना है। तो इसीलिए क्लिनिकल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। अब आपने जब क्लिनिकल स्टार्ट किया तो आप किसी भी मोटिव के साथ स्टार्ट कर सकते हो, एक्सपीरियंस चाहिए आगे कुछ और करने के लिए, या इसी लाइन में कंटिन्यू रखना चाहते हो। तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बाद आप अगर प्राइवेट में जॉब करते हो तो बहुत सारी आपको एडवांस चीजें सीखने को मिलती है, और इसको आप आगे जाके अपने टीचिंग में ऐड करके स्टूडेंट्स को ऐड ऑन कर सकते हो। क्योंकि हर किसी के पास इतना नहीं मतलब हर कोई इतना नहीं कर पाता कि वो प्राइवेट भी कर पाए, गवर्नमेंट भी कर पाए। तो एक्सपीरियंस वाइड करने के लिए आप अपना एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। देन दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट में एंटर किया आपने, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये एक लीव होता है जिसे स्टडी लीव बोलते हैं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक उस हॉस्पिटल में सर्व करते हैं, किसी हॉस्पिटल में वो टाइम 3 इयर्स है, किसी हॉस्पिटल में 5 इयर्स है, तो उसके बाद हॉस्पिटल जिसमें आप वर्क कर रहे हैं वो आपको स्टडी लीव प्रोवाइड करता है 2 to 3 इयर्स की, जिसमें आप अपना मास्टर्स या आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एंड दैट टू आपको हॉस्पिटल पे करेगा आपका सैलरी, सैलरी के साथ पे होने के साथ आप अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। देन आपने बोला था कि क्या 3 मैसेजेस आप देना चाहते हो। तो फर्स्ट मैसेज जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में सीखा है वो तो यही है, जैसे डिक्सन सर ने भी बोला था कि डेवलप करना है अपने स्किल और नॉलेज को। आप जितना ज्यादा अपना नॉलेज और स्किल डेवलप करोगे आप उतना ज्यादा अपने प्रोफेशन में आगे जाओगे। चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप जूनियर नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे आप टीचिंग में हो, आप कहीं पे भी हो, आप अपना डेली अपना स्किल और नॉलेज को डेवलप करो। सेकेंड मैं बोलना चाहूंगी कि स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हम लोग अपने अराउंड एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर लेते हैं, और हर ह्यूमन का नेचर है कि वो कंफर्ट जोन में ही रहना प्रेफर करता है। बट जिस दिन हम अपने कंफर्ट जोन के बाहर स्टेप आउट करते हैं ना, उस दिन ही हम चेंज कर सकते हैं अपने अंदर भी और अपनी सोसाइटी में भी। तो सेकेंड पॉइंट तो स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एंड थर्ड इज, आप जो भी कर रहे हो अपना बेस्ट करो। चाहे आप टीचर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप मैनेजर हो, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आप जिस भी लेवल पे हो आप अपना बेस्ट करो, और इतना बेस्ट करो कि आप रात को पीसफुली सो सको कि हाँ आज मैंने अपना सारा काम किया है, तो आई हैव अर्न दैट पीस, और आप सो सको आराम से रात में। वेरी बस गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, यू रियली सेड अ वैलिड पॉइंट्स, बहुत ही वैलिड पॉइंट्स बोला। ये बच्चे के लिए ये तीनों राइट मैसेज है, शायद वो भी ये इम्बाइब करे, अपने स्टाइल में इम्बाइब करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने स्टाइल में फॉलो करे। थैंक यू Ashvi for that. Let's go with Monica ji. Please, your 3 messages for these youngsters. Yeah, so there are 3 things that I would want to say. The first thing is know your skill, know yourself, what you're good at, what you really exceed at. You know, A cannot be like B and B cannot be like C. Each of us are different. The second thing is know what you want. Is it position? Is it money? Is it status? It is experience? Is it change? Is it like you want to go and explore different countries? You know, each of us have different needs. You cannot compare my need with your need. Okay, so that's the second point. And the third point is know where you want to be in 40 years, what I want to do, what is my ultimate goal, where do I want to reach. So that's the third thing. And one overall point is do not underestimate yourself and do not be afraid of change. Go ahead, take that particular job that you find difficult, you know, or you think it's difficult. Take that course which you think you are never qualified to do. Take anything that comes your way. Opportunities are everywhere. All you need to do is see and look and grab it at the right time. Thank you, Monica. Thank you so much for those 3 messages. हमेशा क्या होता है, बहुत सारे बच्चे एज ए सेड, कुछ बच्चे दिल्ली एनसीआर में पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे यूपी का इंटीरियर में पढ़ रहे होंगे। मैं ये रिकमेंड करूंगी, कहीं भी पढ़ रहे हैं, प्लीज कम आउट ऑफ योर प्लेस, वहां से आके कोई बड़ा हॉस्पिटल में काम कीजिए, छोटे छोटा नर्सिंग होम में ज्वाइन मत कीजिए। उसमें क्या होगा, आपका एक्सप्लॉइटी होगा, राइट चीजें आप नहीं सीखेंगे, सैलरी कम रहेगा, आपको ये भी नहीं पता चलेगा बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। आप सही जगह में काम करेंगे, फिर अपने आप में सब चीजें फॉलो नहीं लगता है, आपको सही
डायरेक्शन मिलता है, आपको लगता है अभी आगे बहुत कुछ पढ़ना है, बिकॉज ये कहते हैं ना कि आप किस ग्रुप में हैं वो आप वही बन जाते हैं। आपके आगे पीछे कौन लोग हैं, आप उनके जैसे, उनके सीखे, उनका सीख से आप सीखते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी, आप पहले आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद में बड़ा जगह में, बड़ा हॉस्पिटल्स में एक्सप्लोर कीजिए। इंग्लिश विल नॉट बी अ बैरियर। मैं बताऊंगी आपको एक स्टोरी। मेरे पास एक सेकेंड जीएनएम का एक स्टूडेंट थी, शादीशुदा थी, उसको इंग्लिश में एक शब्द नहीं बोलना आता था, ना लिखना आता था, एंड वो जीएनएम करना चाहती थी। बट पता है उसका विल पावर इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था, 6 महीने में उसने बहुत कुछ इंप्रूव किया। एंड जब तक वो 3rd ईयर जीएनएम से निकली, शी गेव ए स्पीच इन इंग्लिश। वो इंग्लिश में 100 लोगों के सामने स्पीच देके चले गई। सी, ये ऐसे बहुत सारा सक्सेसफुल स्टोरीज रहेगा। एज एवरीवन सेड, लैंग्वेज बैरियर नहीं बन सकता है। आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक लैंग्वेज ओनली एक मीन्स है, उसको सीखने में कोई आपको हिचकिच नहीं होना चाहिए। सो वर्कआउट ऑन दैट। आज से कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, जीएनएम में है, बीएससी में है, कहीं भी पढ़ रहे हैं, हम सब आपके हेल्प के लिए बैठे हैं। आप अपना अपना कॉलेज में जाइए, अपना अपना टीचर से पूछिए, अपना अपना कॉलेज में क्या कर सकते हैं देख लीजिए, टू डेवलप योर ओन स्किल्स। एंड उसके बाद में हम एज ए करियर काउंसलिंग थ्रू मिशन निरामया वी आर सिटिंग हियर। ऐसे हर 3 महीने में हम आएंगे। आपका कोई भी क्वेरी से यू कैन सेंड टू यूपीएसएमएफ, रितु मैडम है, वो आपका क्वेश्चंस लेंगे। उसके बाद में हम अगेन एक और वेबिनार करेंगे आपका क्वेश्चंस के ऊपर। सो दिस इज फॉर टुडे। हम ये सब आज के लिए किया है। जस्ट एज अ लास्ट वर्ड आई वांट टू से, इफ यू वांट टू बिकम ए नर्स, एक चीज है, कभी मत भूलिए, बिकॉज मैंने एक चीजें सीखा है, लोग है ना सब कुछ भूल जाएंगे, आपने कैसे बोला, क्या किया, उनके सब कुछ बोलेंगे, बट वो ये चीजें नहीं भूलेंगे, उनको आप कैसे महसूस करवाया, आपको उन्होंने आप उनके साथ कैसे व्यवहार रखा, उनको कैसे ट्रीट किया, ये कभी नहीं भूलेंगे। दिस इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। एंड ये नर्स का भी होना चाहिए, बिकॉज यू टच लाइव्स एवरी डे and many lives touch you also every day. So you are one that superhuman being. You can really become a game changer in complete healthcare industry, not only in this state, not only in India, globally I'm talking. Thank you so much for listening. I think और कोई question है हम ले लेंगे, नहीं तो रितु मैडम shall we wind up? If any questions we are ready to take. अगर कोई किसी के अगर सवाल हैं तो प्लीज जस्ट रेज योर हैंड्स, तो मैं आपको अनम्यूट करके आपके सवाल ले लूंगी। किसी की कोई सवाल हो तो कोई सवाल तो नहीं दिख रहे हैं, तो आई थिंक we'll close it at this. Yeah, thank you. I think they have asked already many questions in between the session. And lastly, I would like to thank again the UP government, our Chief Minister, our Principal Secretary, and the whole team of Mission Niramaya. This is the whole brain behind Mr. Abhishek and Ms. Ritu, the whole effort of the creative team behind them working. I'm really thankful to them giving us this opportunity. Being a mentor, we feel pride and proud to carry on this noble cause. If we can even help some children to reach out to the right place, the right career, I think we feel this webinar is successful. And all the panelists who have come from taking out their valuable time, Mr. Jackson, Ms. Grishma, Yeshvi, Sibi, and also Ms. Monica, being so busy in her own Japago activities. She's here to motivate all of you. Thank you so much, each one of you. Really grateful to all of you for your time and the energy and your experience. Let's connect more and more. Let's motivate more and more children. Let's make our profession grow day to day. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Professor Lavanya. Thank you everyone, including our great panelists, for giving such good inputs. आप लोग ने इतनी खुल के अपनी बातें रखी हैं। आई एम श्योर बच्चों को जो जितने यहाँ पे जुड़े हैं हमसे, उनको बहुत प्रेरणा मिली होगी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी जो नॉर्मली कॉलेज वगैरह में नहीं मिलती है। तो ये इस तरह के सेशंस हम और करेंगे, अब हिंदी में भी करेंगे, बाइलिंगुअल भी होंगे। आपके सवाल हमें जरूर लिख के भेजते रहिए। ईमेल्स आपके पास ऑलरेडी हैं, उसी ईमेल पे आप भेजते रहिए। हम जल्द एक और सेमिनार ऐसा
फिर से करेंगे और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी लाइक करें और फॉलो करें, वहां पे भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, सवाल शेयर कर सकते हैं, हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। तो बस इन्हीं लास्ट शब्दों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। Thank you everyone. Thank you so ma'am. much. Thank you. Have a good Thank day. you. Thank you. Just one Have a thing, good can I request everyone to have your cameras on so that I can take a picture, a screenshot? Even the participants also. Everybody. You have to, I think, yeah, unmute them. The video, their video should be Have the permitted. cameras on, that would be great. And also, if you were attending in groups, send us pictures, tag us, put them on the group. I see Padota, Anthony. I think they have a group. All the other groups, it would be great to see. I see They that can come on. one participant has asked like how to contact you or something like that. Maybe beta Anu Kumari, she might be a student, I think. बेटा आप नाइटिंगेल के वेबसाइट में देख सकते हो लावण्य नंदन मैम। I think Ritu ma'am, you can send your mail ID here. I think they can note down. That will be better. लिखती हूँ यहाँ पे। ये है मेरी email ID. आप इसमें just if you can put in a chat box, they can note down. I think many children must not be knowing the mail ID. आप इस पे अपने सवाल भेज सकते हैं। मिशन निरामया @upsmf.org। मैं एक मिनट, I think I got it wrong. You have written it wrong, Ritu. Yeah. I have it. Wait. No, it's correct. Yeah, here you go. ये है, आप इसको प्लीज कॉपी कर लें, नोट कर लें। और इस पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं, कोई फोटोग्राफ्स हो तो वो सब भेज सकते हैं। आपके कुछ कॉलेज में आपने कुछ अगर ऑर्गेनाइज करा है तो उसकी वीडियो भेज सकते हैं। हमें वीडियो स्पेशल बना के आप भेज सकते हैं कि कॉलेज में आपको कैसा मजा आ रहा है, किस किस तरह से आप अपने दोस्तों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो अपने कॉलेज से भी इंफॉर्मेशन हमें भेजते रहिए। हम लोग हर थर्सडे को एक स्पेशल पोस्ट डालते हैं जो कॉलेज कैंपस डायरी के नाम से है, तो आप जरूर डालें। उसमें बहुत सबके साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे की लर्निंग होगी, है ना। So that's it. मैंने ले ली है। Okay, thank you. ठीक है अनुजी, बढ़िया, आप फ्रेशर हैं, आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। आप मिशन निरामया वाला जो मैंने आपको ईमेल एड्रेस दिया, आप इस पे भी जाके अपने सवाल डाल सकते हैं, तो हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। Thank you so much, Anu. Thank you so much. Thank you so much, everybody. Thank you.